So, hello everyone. So, we will start a new topic which is very important, plate tectonics. It was in 1967, Mackenzie and Parker and also Morgan independently collected the available ideas and came out with another concept which is known as a plate tectonics. Massive irregularly shaped slab of solid rocks, generally composed of both continental and oceanic lithosphere, plate move horizontally over एस्थेनोस्फीयर एज अ रिजिड यूनिट। सो जो यहाँ समझ लो अगर ये एथेनोस्फीयर है तो जो प्लेट है वो हॉरिजॉन्टली मूव कर रही है यहाँ से। लिथोस्फीयर इंक्लूड क्रस्ट एंड टॉप मेंटल विथ थिकनेस रेंजिंग वेरी बिटवीन 5 and 100 किलोमीटर इन ओशनिक पार्ट एंड अबाउट 200 किलोमीटर इन कॉन्टिनेंटल एरियाज। तो जो लिथोस्फीयर है उसकी थिकनेस 5 to 100 किलोमीटर है ओशनिक पार्ट्स में और 200 किलोमीटर है कॉन्टिनेंटल एरियाज पे। Pacific plate is largely an oceanic plate. The Eurasian plate is maybe continental plate. सो जो पैसिफिक प्लेट है हम उसे ओशनिक प्लेट भी कह सकते हैं और यूरेशियन है उसे हम कॉन्टिनेंटल प्लेट। थियरी प्लेट टेक्टोनिक्स proposes that Earth lithosphere is divided into 7 major and minor plates, which, while young fold mountains, ridges, trenches, and folds surround these major plates. Now, some of the major plates are Antarctica and surrounding oceanic plates, North American plate, South American plate, Pacific plate, Indo-Australian New Zealand plate, Africa with Eastern Atlantic floor plate and Eurasia and adjacent oceanic plate. सो ये जो 7 हम देख रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट प्लेट है जो मेजर प्लेट में हम कहलाते हैं। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल।